Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, we are going to discuss energy band theory. So we will be discussing how energy bands are formed in semiconductor. We know that according to Bohr atomic model, in an isolated atom, energy of any of its electrons is decided by the orbit in which it revolves. किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी को कौन डिसाइड करता है? जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है. ये तो केस हो गया जब सिंगल एटम की बात कर रहे हैं. बट व्हेन वी फॉर्म अ solid, then atoms are brought close together. Then what happens? Outer orbits of electrons from neighboring atoms, they would come very close or could even overlap. तो outermost electrons में interaction शुरू हो जाएगी. Now each electron has a unique position and no two electrons have exactly same pattern of surrounding charges. अब हर इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो एक पर्टिकुलर हो जाएगा और किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के आसपास का जो चार्ज का पैटर्न है वो सेम नहीं रहेगा. नाउ व्हाट हैपेंस? ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल. These different energy levels will have continuous variation of energy. They will be lying very close to each other and they will form energy band. To understand this further, let's consider example of semiconductor. I'm talking about silicon or germanium. What is difference between two? In silicon, third orbit is outermost. In germanium, fourth orbit is outermost. I take example of silicon. This is the electronic configuration of silicon. Now, in this isolated silicon atom, 3s and 3p are energy levels in which valence electrons are residing. So there are 4 valence electrons. 2 are lying in 3s subshell and 2 are lying in 3p subshell. Now, when I talk about n such kind of atoms, in each atom 4 valence electrons are there. In n atoms, total number of valence electrons available will be 4n. I'm talking about the state when there is no interaction between all the atoms. All are isolated. Now, maximum number of electrons in outermost orbit can be 8. 2 will lie in 3s and 6 can lie in 3p subshell. But in our case, how many valence electrons are there? 4 in each atom and 4n in n atoms. So, when I talk about n individual atoms, how many energy states are available? 8n. 2n for 3s and 6n for 3p. But when there is no interaction between different atoms, they are far apart, let at distance d, then what happens? 3s levels in the outermost shells of n atoms will be filled by 2n electrons, 2 electrons from each atom, 2n electrons from n atoms. Similarly, 3p levels, how many are there? Total 6n. In each atom, 2 electrons are residing in 3p subshell, as a result of which in n atoms, out of 6n, 2n will be filled and 4n will be empty. All 8 and discrete energy levels can form bands depending upon distance between atoms. Let's understand this. When there is no interaction between atoms, suppose that distance d, these levels are unmodified. But as atoms are brought close, suppose they are at distance c, then electrons in outermost shell, they start interacting with each other. So 3s levels energies will be modified. Similarly, 3p levels energies will be modified. 3s की भी energy modify हो जाएगी
लेवल्स की और 3p लेवल्स की भी एनर्जी मॉडिफाइड हो जाएंगी। अब पहले तो क्या था, आइसोलेटेड एटम में सारे 3s जो लेवल्स थे, जो हर एटम में से दो दो आए थे, सबका सेम एनर्जी था। लेकिन अब इंटरेक्शन होने से सब सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे, क्योंकि एन एटम की बात कर रहे हैं, तो 2n s लेवल्स 3s लेवल्स सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे। सिमिलरली 6n 3p लेवल सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे। अब होगा क्या कि जैसे ही हम सी डिस्टेंस पे लेके आए, ये जो 3s लेवल्स हैं ये एक क्लस्टर बना लेंगे, जिसमें कितने एनर्जी स्टेट्स है, 2n। अब उन सबके सेम एनर्जी स्टेट नहीं है, दे आर स्लाइटली डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर, दे विल लाई वन अपॉन अनदर विथ स्लाइट वेरिएशन, तो एक बैंड बन जाएगा। सिमिलरली 6n 3p levels will form another band। अभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि दिस इज क्लस्टर ऑफ 3s level sub level and this is cluster of 3p, but if distance between atoms is further reduced to distance b, then distinction between 3s and 3p level will disappear। Now all 8n levels, 2n कहां से है, 3s से, और 6n कहां से है, 3p से, they will lie one upon each other with slight difference in energy, forming a single band। Out of these 8n energy levels, 2n plus 2n, total 4n are filled and 4n are empty। अब s और p में तो कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, बट empty और filled लेवल्स में डिफरेंस किया जा पाएगा। But if distance between atoms is further reduced to a, then filled 4n levels, they will form a band, they will have energy value slightly lesser than empty energy levels which are also 4n number। तो दो बैंड बन जाएंगे, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या है, जिसमें 4n एनर्जी लेवल्स फिल्ड है लो टेम्परेचर पे, और कंडक्शन बैंड में 4n एनर्जी लेवल्स fully empty है and separated by small energy difference known as forbidden gap energy। तो दो बैंड हो गए, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, और कंडक्शन बैंड कम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, एम्प्टी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप ओवर करेंगे कंडक्शन बैंड में आफ्टर एक्वायरिंग एनर्जी इक्वल टू बैंड गैप एनर्जी, एंड देन सेमीकंडक्टर विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो ये जो एनर्जी गैप है, ये जीरो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम। अगर तो जीरो है फिर तो कंडक्टर की बात हो रही है, अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इंसुलेटर की बात हो रही है, अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।